Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss about the various papers of today and the coming days. So the esteemed team members of Edge IAS will be discussing their sections. So as you know that the UPSC mains 2025 is going on, and abhi we have essay, and the 4 GS papers have already been concluded, and next week we have the coming end of the week we have optionals. So the idea behind today's discussion is to start. So I am Pramod Singh, I'm the director of Edge IAS, and I'll be discussing about Indian economy. And first discussion would be of the CSE mains 2025. And in this, the discussion would be what kind of question have come, the segregation in terms of the questions, trend kya hai, the sources, and how you prepare the these papers for your examination. So we have produced the detailed model answer solution also, and I'm going to discuss about the GS paper 3. Now before going ahead, in total the number of questions that have been asked in GS paper 3 economy section, so we have the questions that have been asked and the topics also. So 115, the 10 marker, 4 questions, and the 15 marker, 5 questions. So total 40 and 75, total 115 marks have come from. इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं where there is a general feeling that it is a part of the environment or it is a part of some other section. But yes, I have taken the liberty to cover them in the economy section. Now coming to the topics that have been covered. Now if you try to see the trend of GS paper 3, in GS3 broadly economy section, कहाँ से सवाल आते हैं? Normally one is agriculture, which covers almost 50% of the syllabus of GS3. Second is development and growth. These are two maximum areas जहाँ से आपके question 70% question mains में आते हैं. And then the miscellaneous topics, which covers the LPG, the planning, infrastructure, industry. Okay, so this year 35 marks are coming from the agriculture, 3 questions. In growth and development, 1 question, 10 mark. And in the miscellaneous section, we have topics that have been covered. For example, we have LPG. Okay, 2 questions. LPG, we are living an era of deglobalization. Okay, protectionism. So LPG बहुत important topic हो जाता है. Then also there is a topic called resource mobilization, the fiscal capacity of the states. Industry, very important, 2 questions. And irrigation, 1 question. Now broadly जो Indian economy का section है, in this there are static topics and there are dynamic topics. Most of the questions are dynamic in nature. इसमें से 3 questions are static syllabus से भी आए हैं, but the remaining questions come from the dynamic section. Now when you try to look at it, the syllabus point of view, we have to study accordingly. पहला question, the first question of the preparation, let's understand. The first question is about Human Development Index. This is from growth and development. So in growth and development, now normally we study HDI. Now when you see the, अगर आप देखोगे तो recently in the news, it is a dynamic area. On 7th May 2025, it was in news. 7th May 2025. So every year HDI report आती है, but they have done a little. They are comparing inequality adjusted HDI versus the HDI. So normally HDI report comes, but they have HDI report में they also give a reference of inequality adjusted approach also. So if you go with a coaching approach or in general students normally आपका HDI पढ़ते हैं, don't study IHDI. But here, if you use your common sense, you can easily arrive at the solution stating inequality में inequality adjust हो जाएगा. Now question is why this question came? Because when you see in the recent time, inequality is being discussed. बार बार inequality discuss हो रहा है. Inequality, World Inequality Report discuss हो रही है. Oxfam की report discuss हो रही है. Also recently World Bank की most equal report. India is the 4th most equal country in terms of कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उस पर भी अभी डिस्कशन चल रहा था लास्ट
2-3 months में. So inequality was very much in news all the time. So naturally from that perspective inequality कैसे measure होता है, we have tools for measurement of inequality, for example quintile ratio, Gini coefficient, Lorentz curve. तो इससे आप inequality को measure कर सकते हो. However, the question is more about distinguish between HDI, ISDI. So HDI measures development from the perspective of standard of living, health and education, and in the inequality आप inequality के parameter को add कर देते हो. So naturally that way when you try to see the last 2-3 years report, inequality ISDI में inequality widely it is increasing. And why ISDI is better indicator of inclusive growth? Because this topic is from inclusive growth, development. So inclusive growth में inequality gives a better understanding of how divides are widening in society. Inequality is very much present. Rural, urban, gender, states. Then inequality, the true measure of development is about understanding how humans are doing, not only in terms of education, health, but also understanding कि आपका well-being कैसा है. And because society में resource जो distribution है that is being उसमें एक divide बढ़ रहा है. There's a disparity which is there. So naturally हमारा the data will help us to understand the present problems of inequality, and policy focus होगा where we'll focus more on the weaker section of society. Then how the benefits are being shared, and एक targeted welfare policies हम create कर सकते हैं. For example, when you try to see the amenities approach where government provides basic facilities to the people, they will follow this approach. So HDI के क्यों better indicator है? You have some 4-5 pointers you can put, and this is 150 word answer. You can summarize in a very simple way. Again, data is important. If you don't have data, don't worry. But if you have data, nothing like it. So आप current data से भी interlink कर सकते हो. The second question, very relevant, very contemporary, LPG globalization. Now, world is moving from. So when you try to see 1995 में, the WTO came. And the era of globalization started in the late 60s, 70s, 80s and 90s also. WTO was promoted. Multilateralism was promoted. There was rise of USA as a superpower. Now, but the last few years, rather a decade I would say, we are witnessing multiple trends. USA-China trade war, Brexit, weaponization of tariff, pandemic-induced supply chain, nationalism or disruption. So naturally, there is a rise of protectionism. यानी countries economy अपने आप को protect कर रही हैं. Even India, country like India, we came with the Atmanirbhar Bharat mission. Then bilateralism. Now suddenly there is a feeling कि आप multiple countries से trade नहीं कर सकते हो. तो instead of doing that, just collaborate with one or few countries. So India also has made effort. Now first of all, what are the challenges? There are two part of the question. पहला है challenges क्या क्या हैं, and second is how India can address them. So challenges that India is witnessing because of rising protectionism and bilateralism is market कम हो रहा है, market access reducing, supply chain is getting disrupted, there is uncertainty in terms of future and investment, trade diversion हो रहा है, geopolitical pressures हैं, WTO is no more organization which is effective, especially dispute resolution का जो mechanism था WTO का वो almost paralyzed है in the last few years. So this topic is very much in reuse. Almost every third, fourth day आपको एक article मिलेगा. Every month you'll get article on this. Now what is the solution? These are the problems. Solution क्या है? Again data is very important. India क्या कर सकता है? India can diversify the exports by looking at diversification of agriculture, diversifying in the FTAs. We have recently signed free trade agreement with UAE, Britain, UK. Britain, then UAE के बाद हम लोग EU से negotiate कर रहे हैं. We are also negotiating trade agreement with USA also. Second is we need to focus on Atmanirbhar Bharat 1.0, 2.0. So we have schemes like Make in India, production linked incentive scheme. हम domestic manufacturing को promote कर रहे हैं, and we also are focusing on improving the competitiveness of the industry. And the idea is that you can't have a very overarching agreement approach जहाँ सब लोग के साथ आप trade कर पाओ. तो why don't we identify partners and we can do trade accordingly? तो strategic bilateral agreements हमारे बढ़ रहे हैं. In fact, one good approach can also be that the way we are purchasing oil from the Russia. That can also be one of the ways to do that. Strengthen global South-South cooperation. Now, India is a country which represents the emerging economies. तो हम emerging economies को represent कर रहे हैं, तो automatically it is very important that South-South cooperation, where we have organization like BRICS, Global South Forum, IPEF, these are being promoted. और हम individual level पे भी इन countries को approach कर रहे हैं, and we are trying to collaborate with them because suddenly the world is uncertain. Then leverage digital economy, and here government is trying to push e-commerce and the digital exports
Also, we are witnessing an era of challenges of globalization. Along with that, the problems of climate change. तो we are trying to adapt ourselves, and accordingly आप बहुत समराइज तरीके से effectively आप इसको लिख सकते हैं. This question number 2 very contemporary. Okay, very contemporary. The only thing that you have to write in a very defined time. 7 minutes में आपको लिखना है. The third is factors influencing farmers' decision in the selection of high value crops. So 2015-16 Ashok Dalwai committee came, और अशोक डलवी कमिटी कहती है कि हाउ डू वी डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स. नाउ हियर डबलिंग द फार्मर्स इनकम विल इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स फ्रॉम द फार्मर साइड, जहां पे हम उनके ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड पे फोकस करें. ऑल्सो दे नीड टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न एंड अर्न इनकम. सो हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप, ये एक नया ट्रेंड है, एंड दीज विल इनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर्स. सो द फोकस इज ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन. तो क्या क्या हमारे फार्मर्स के रीजन है व्हाई फार्मर्स आर अडॉप्टिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स. हाई वैल्यू क्रॉप जहां पे आपको वैल्यू ज्यादा मिलता है. नाउ हियर यू गेट गुड रिटर्न एज पर द वेरियस डेटा. जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, स्पेशली हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, दे गिव यू एटलीस्ट 2 to 2.5 टाइम्स मोर रिटर्न देन द नॉर्मल आपके क्रॉप्स है. सो हाई इकोनॉमिक रिटर्न. सेकेंड इज मार्केट एक्सेस. नाउ एक तो इसका शॉर्ट, मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स का शॉर्ट साइकिल होता है, एंड बिकॉज द साइकिल इज शॉर्ट यू कैन इजीली गेट द मार्केट एक्सेस. देन क्लाइमेट एंड सॉइल सुटेबिलिटी इन मेनी एरियाज लोकलाइज कंडीशन प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मखाना, now makhana is being produced in certain part of Bihar because of the accessibility of the climate, also जो उनका लोकल जोग्राफिकल जो है टोपोग्राफी है वो भी हेल्प करता है. सो हियर द सॉयल एंड क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी सुटेबिलिटी. द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, अभी मखाना 600 रुपए किलो था तो वो 1600 हो गया, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द डायनामिक्स इज चेंजिंग द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. Similarly, we can promote exports for spices and other areas like rice, basmati. One district, one product. इसमें भी आप देखिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. बुद्धा राइस. Now बुद्धा राइस is a rice जो प्रोड्यूस होता है in which part of सिद्धार्थ नगर in UP, and that is associated with the land of Buddha, and that is also a GI, geographical EI. और उसका जो उसको बुद्धा राइस नाम दिया है, दो इसका रियल नेम काला नमक है. Now that has changed the way farmer को बहुत सारा benefit मिल रहा है, and their income has increased in a very high manner, sustainably. Then irrigation facility, input, government का support, for example, horticultural mission, the top mission, APMC reform, operations green. Now these are ways to government is identifying. In fact, interestingly, government हर sector में जहाँ पे opportunity हो सकती है वहाँ government promote कर रहा है. The farmers का input cost government bear कर लेती है. Horticultural output also has landmark हमारा output रहा है. We have crossed the food grain production. So this is something which understands the market demand also. So that is question number 3. Question number 4, very static, simple. Significance of scope and significance of supply chain management of agricultural commodities. तो हमारा जो supply chain है, right from supply chain management means from the farmer's field to your plate, okay, to farm to fork. How the entire thing is being balanced and approach, we have to look at it. So इसका scope क्या है? Sub scope, very wide scope in the procurement, in the storage and warehousing. Even today also 18 to 20% हमारा food जो है वो waste होता है. The post harvest losses are there, technology issues are there. Then transportation logistic कमजोर है, we still have to work on them. Also we are witnessing a change in the dietary habit and demand. तो processing and packaging industry का demand बढ़ रहा है, रिटेल का डिमांड बढ़ रहा है. तो दिस इज अ ह्यूज स्कोप इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड देन दैट इज द यू इन पॉइंटर्स को आप लिख सकते हो. अगेन वेरी स्टैटिक टॉपिक, आई विल नॉट गो इन मच डिटेल. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर. नाउ इफ वी स्ट्रेंथन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाउ इट विल हेल्प द इकोनॉमी. पहला, इट विल मिनिमाइज द लॉसेज कम कर देगा. इट विल इनकम एनहांसमेंट. द फार्मर्स हु आपने सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाया, द कॉस्ट, हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गए, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो गया, इनकम विल इंक्रीज. फूड सिक्योरिटी, बिकॉज नाउ इंडिया रिक्वायर्स क्वालिटी फूड ग्रेन. वेस्ट हार्वेस्ट जो है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होगा, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फूड सिक्योर होगा. ऑल्सो पेरिशेबल आइटम्स का वेस्टेज कम होगा. एक्सपोर्ट बूस्ट होगा बिकॉज हमारे कॉस्ट कम हो जाएंगे. इंडिया इज ग्रोइंग एग्रो एक्सपोर्ट्स क्रॉस 50 बिलियन इन 2023. Boost rural employment because it is linked with agriculture, and agriculture
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है. So we have to boost this process, and climate resilience, where we have to reduce the wastage and the carbon footprint. So overall, when we try to see it, very much relevant topic that has to be seen. तो आप देखिए current का topic है, static topic है, you know. Then next is fiscal health index. Now fiscal health index ये current का topic है. This topic is related with syllabus, जहाँ पर we have a resource mobilization, और यहाँ पे fiscal health index, it is a नीति आयोग report. एंड आप देखोगे तो ये आपको गूगल जैसी करोगे, यू विल फाइंड फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑन 22 अप्रैल 2025. सो कंटेम्प्रेरी से लिंक करके, इट इज अ टूल फॉर असेसिंग द फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट टू इनकरेज स्टेट्स टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी. नाउ व्हेन यू ट्राई टू लुक एट इट, नाउ लेट्स सी वेरी इजीली. मोमेंट आपने कहा, आप देखो 22 अप्रैल 2025 को फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट आया है ना. फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट इज अबाउट फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस स्टेट्स, हाउ दे आर परफॉर्मिंग. और यहाँ पे आप देखिए, we have the states which are there, 18 states, and we have FHI scores have been given on multiple parameters. पहला है quality of expenditure, revenue mobilization, fiscal prudence, debt index and debt sustainability. तो इन parameters पे हम लोग study कर सकते हैं. Now here if you have read this topic, normally ऐसे टॉपिक मेंस में आ सकते हैं, एंड यू कैन इजीली गो थ्रू दैट. सो नाउ हियर वी हैव अचीवर स्टेट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात. दीज आर अचीवर स्टेट, दैट मीन्स दे आर डूइंग गुड. एंड देन वी हैव एस्पिरेशनल स्टेट लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, स्टेट जीडीपी, एंड दे हैव टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस. सो व्हेन यू ट्राई टू लुक एट इट, दिस इज अ टॉपिक व्हिच वाज वेरी मच इन न्यूज इन द एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से. तो यू हैव टू फर्स्ट how, the only thing is that maybe आप तैयार नहीं हो उस टॉपिक के लिए. You might have an idea, but it's a tool to assess. Now you have performance parameters where we have indicators like fiscal deficit, revenue deficit, debt to GSDP ratio, interest payment, internal tax revenue कितना है. So all those things are there. तो मैं थोड़ा इसको tough topic मांगता हूँ. The reason is that student have to go in the technical details of the topic, which I'm sure people might not have prepared. But still 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास. अगर एक मैंने in many of the topics I have already covered in my the crash course of the mains GS3, where I have covered the performance of states fiscally. मैंने उस पर एक पूरा जो है टॉपिक कवर किया है. So that data can be used directly here easily. So based on that you can do that. और ये जो रिपोर्ट है फिस्कल परफॉर्मेंस की, this is based on CAG report of 2022-23. तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो CAG का रिपोर्ट है उसके बेसिस पर ये है. सो वे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? कॉमन सेंस लॉजिक. यू हैव टू हैव फिस्कल डिसिप्लिन, यू हैव टू मेक पॉलिसी इंटरवेंशन, यू हैव टू अलाइन विद द FRBM एक्ट, और एक और FRL है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, FRL. तो सपोर्टिंग फंडिंग एंड ग्रांट्स, तो ये सारे एस्पेक्ट पे आप डिस्कस कर सकते हो. RBI in collaboration Ministry of Finance has piloted FHI for 29 state which score widely, and 15th Finance Commission emphasizes fiscal health and recommendation on performance based incentives, and FHI can be effectively supported. तो इसके बेसिस पर we can measure how the states are doing financially and fiscally, and what measures they can adopt to do well. अगर आपको डेटा नहीं पता है तो I'm sure you must be knowing that पंजाब और वेस्ट बंगाल, केरला, दीज आर स्टेट जो बहुत ही फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाई डेट, और अपने सैलरी पेमेंट में भी इनको दिक्कत आ रही है. नाउ दिस वाज इन न्यूज, सो इफ यू डोंट हैव द डेटा आल्सो यू कैन इंटरलिंक एंड गिव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. देन PLI, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मच इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 5 ईयर. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हमेशा इसकी बात होती है. सो व्हाट इज द रैशनल ऑफ PLI एंड व्हाट इज द अचीवमेंट्स ऑफ द PLI एंड व्हाट आर द फंक्शनिंग एंड आउटकम, हाउ कैन बी इंप्रूव. तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के. तो पहला तो रैशनल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज अ पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड फेज 2020. सो अराउंड दैट टाइम गवर्नमेंट फोकस्ड हियर. तो आइडिया इज टू इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग contribution in the GDP. So domestic manufacturing promote करना है, improve the exports because very important,
and focus more on the MSME sector because MSME growth engines हैं, job creator हैं, they also export boost करते हैं, attract investment, scheme encourage both domestic and foreign investment, employment generation because जो आपका manufacturing sector है, it is the largest employment absorbing sector in the economy and reduce the import dependency. वो अभी भी बात हो रही है after this the whole the tariff war, the trade protectionism, where it is believed that हम आप पे depend नहीं होंगे, though it is different than the self-reliance of 1951 जो हमारा सोशलिस्ट एरा का था. दिस इज मोर अबाउट डेवलपिंग द कैपेसिटी, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड मीटिंग आवर डिमांड्स फ्रॉम आवर ओन कैपेसिटी इफ वी हैव द कैपेबिलिटी. तो ये सारे अप्रोच हैं और मैंने आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इन माय क्रैश कोर्स. अगर आप देखोगे उसके वीडियोस को, आई विल शो यू इट एज वेल. देन अचीवमेंट्स ऑफ PLI स्कीम. नाउ PLI की स्कीम क्या है? 14 सेक्टर्स कवर्ड. Reports indicate 2.5 lakh crore of incremental production. Goods worth 2 lakh crore have been incentivized since inception. Investment इससे boost हुआ है 1.5 lakh crore. Employment generation of 6 lakh people. Electronics manufacturing, India second largest manufacturer हो गया है electronics में, where 300 million phones are sold globally. इस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिपोर्ट दिया. our Minister Mr. Piyush Goyal, he came with multiple data. तो ये हमेशा न्यूज में था. Thereby it is very much expected to answer this. How do you improve it? By streamlining process, widening the scope, MSME को और contribute करें, infrastructure linkage करें, and environmental compliance लेकर आए as per the global demands. So this is the question number 6 in the PLI area. Then coming again to this question, और ये बहुत ही important question है because this was always in news. जो इंडिया का ग्राउंड वाटर सप्लाई है, रिसोर्स डिप्लीशन है, इन हिंदू लास्ट 2 year में 4 to 5 times this has come. Now one thing is very clear, अगर आप करंट को, if you are just reading primary source, आप one newspaper रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, your mains, even prelims, मेंस स्पेशली GS2 GS3 बहुत अच्छे से निकल जाएगा because almost every topic is covered in the current part. Now factors responsible for the depleting groundwater, क्या क्या factors responsible हैं, that is secondary, but let's understand. So the first part is factors responsible for depleting groundwater in India. Second is what are the steps taken by government to mitigate the depletion of groundwater. So here we have groundwater. So first is excessive irrigation demand. Now India में 65% of irrigation groundwater से आता है, 85% of drinking water also comes from the groundwater. Okay. Now unregulated groundwater extraction. Now you have problems क्या क्या है? Why groundwater is depleting so fast? So 90% of groundwater, effective regulation is needed. Declining recharge rate. इसमें आप डेटा दे सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, some parts of UP. Population pressure. Then the data from Central Groundwater Report shows 30% of India's groundwater blocks are already overexploited under Punjab, Rajasthan being critically affected. इस पर हिंदू का मैं देख रहा था. On 4th Jan 2025 the news was there. On 5th August 2024 news was there. On 22nd March 2025 news was there. On 25th Jan 2024 news was there. तो इस पर आपको regular articles मिले हैं and I'm sure this is a very current based topic which can be covered. Now what are the government measures to mitigate them? Atal Bhujal Yojana, National Aquifer Mapping and Management Program, promotion of micro irrigation, regulatory framework, rainwater harvesting, and water energy nexus management. So this is a contemporary topic which is there. So बहुत easy topic है, but prepare होना चाहिए. I'm sure students must have readied and prepared this topic. Now the next is the food processing industry. The most, मेरे हिसाब से this is the most accepted, most favorite topic of GS3. और फूड प्रोसेसिंग पे तो हमेशा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. इन द लास्ट 10 years दिस क्वेश्चन हैज कम मल्टीपल टाइम. स्कोप, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वेरी सिंपल. सो व्हाट इज द स्कोप? द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल, वास्ट एग्रीकल्चरल बेस, कंज्यूमर डिमांड, इवॉल्विंग सप्लाई चेन. तो स्कोप क्या है? In terms of GDP, it is 11% of India's GDP, 8% of manufacturing, 5th largest sector in terms of foreign exchange earning. Market size बहुत तेजी से grow कर रहा है. The product diversity is there. There's a demand domestically as well as foreign. Reducing post-harvest losses का भी scope है. Then government measure, प्रधानमंत्री formulation of micro food processing scheme, PMFNE, mega food park, creation of cold
चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये सारे गवर्नमेंट के अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं एंड देयर आर 5 गवर्नमेंट मेजर्स आर देयर. सो ये एक बहुत ईजी सिंपल टू द पॉइंट टॉपिक हो सकता है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक कॉल्ड द इंडिया एम्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. अगेन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है. व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय, तो ये इंडस्ट्री का पार्ट है. मेंशन द सेलेंट फीचर्स. सो वी हैव सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इस पे भी मैंने करंट में अपने टॉपिक में कवर किया है. चैलेंजेस क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन इन द कंट्री. सो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट, ग्लोबल कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड R&D. नाउ इंडिया में बहुत सारी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटास, दे आर ट्राइंग टू फोरे इनटू दिस एरिया. तो वी हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. देन सेलिएंट फीचर्स सेमीकंडक्टर मिशन क्या क्या है? क्रिएशन इकोसिस्टम, यू नो, डेवलपिंग एंटायर फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल टू सप्लाई फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक हमें करना है. गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव दिया है कि 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी कवर्ड अंडर दिस. एंड स्किल डेवलपमेंट करना है. वी हैव टू क्रिएट मैन पावर फॉर फ्यूचर एंड कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स एज वेल. So this is very much to be covered. Now try to understand. Take it, make it simple, make it easy. Cover from, because I can see students ने बहुत सारा पढ़ा है. I have gone through market का material and you'll be surprised to know लोगों ने 500 pages का material दिया है. No. If you see list the important topics, you will find that almost all important topics exam में जो आए हैं वो न्यूज़पेपर से, basic sources से आए हैं. Make sure you cover them properly because UPSC ये नहीं चाहता है जिसने ज़्यादा पढ़ा है, जिसने effectively smartly पढ़ा है उनका एग्जाम निकले. So I think that summarizes the entire thing. Thank you very much. Do like the video, subscribe to the channel, and different faculty team members will come and cover their sections. And we will, as Edge IAS, हम एक पूरे team लेके आए हैं where different faculty members, all they are the best in the industry in terms of knowledge, in terms of understanding of the competition. और उनका जो intent है, they are very much grounded and very much available because it is not about just the teaching, it is about guiding your journey and making things in the end. End तक बेटा आपकी जर्नी को सस्टेन करना है and that is where our team stands out. So I cover economy section, JKP sir cover Indian polity section and public administration, Vineet sir covers history section and the history optional, Meghra sir also is covering history. Similarly we have Manse Sarma sir covering geography and environment. Again these are top in the field, very much knowledgeable, very much grounded. Vikram sir covers security and ethics. So Appu Tiwari sir covers science and tech, and I'm sure that when you come to us, you'll feel the difference and you'll feel, the coverage that we've done. In fact, ये सारे topics को मैंने अपने crash course में और in my class notes, they've been covered very in a structured manner. So thank you very much. Do like the video, and subscribe to the channel, and be regular for preparation updates, and reach out to us for any guidance support if you require.